हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज से जुडिशरी को स्टार्ट कर रहे हैं और जुडिशरी का हमारा सबसे पहला टॉपिक है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल। इट इज डेवलप्ड बाय नालसा, ठीक है, ऑन एंड मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी एमसीपीसी। एमसीपीसी जो है वो कंस्टिट्यूट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 2005 to oversee effective implementation of mediation and conciliation in country. It provides comprehensive training in mediation to legal professionals across the country and promotes alternative dispute resolution mechanism. इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी इन मीडिएशन टू लीगल प्रोफेशनल, जो लीगल प्रोफेशनल है उनको मीडिएशन में ट्रेनिंग दी जाएगी। और ताकि इस किस लिए यूज किया जा रहा है? ताकि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट किया जा सके। अभी क्या है एडीआर? क्या है? It is a process in which disputes are addressed and settled outside courtroom. तो क्योंकि कोर्ट में इतने सारे केसेस हो जाते हैं कि उनको कंप्लीट करने में साल केसेस पेंडिंग रह जाते हैं, तो इसलिए एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेकर के आया जाता है जिसको कोर्ट रूम के बाहर ही रिजॉल्व किया जाता है। It offers to resolve all type of matter including civil, commercial, industrial and uses neutral third party to communicate and resolve dispute. टाइप्स क्या है एडीआर के? आर्बिट्रेशन है, a neutral arbiter rendering a decision, renders a decision calling an award after there has been presentation of evidence. Mediation, a very flexible process that can be effectively used at any time during the course of dispute. Conciliation है, neutral third party to communicate with parties in exchange of information and settlement options. Negotiation, traditionally occurs directly between parties and their counsels and does not involve neutral third parties. में कोई तीसरा बंदा नहीं होता है। Collaborative law, both party have represented by collaborative attorney and both party agree not to litigate. इसमें आप बोलते हैं कि आप litigate नहीं करोगे, agree कर जाते हो इस बात से। तब ये हमारा जो नेक्स्ट एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है ऑन आर्बिट्रेशन, उसको हम देखते हैं। डोमेस्टिक में क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एज पर यूनिसेक्टरल मॉडल कोड applicable to all kind of arbitration including commercial disputes. Act has been amended in 2015, 19 and 21. This act of 2021 amended act allows for an unconditional stay of enforcement or of arbitral awards in case where arbitration agreement contracts or award itself were obtained through fraud or corruption. This amendment was effective retrospectively from, यानी कि इसको हम पीछे जाकर के भी सही कर सकते हैं, यानी कि अक्टूबर 23, 2015 से जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 for facilitating institutional arbitration, Indian Council of Arbitration, a society registered under Societies Registration Act 1860. Now global हम देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हम इसमें established in 1923 by International Chamber of Commerce. Permanent Court of Arbitration present established by Convention for Pacific Settlement of International Dispute in 1999 at Hague, India is party, and unilateral model law on international commercial mediation and international settlement agreements. इसके बाद मीडिएशन लॉ जो एक्ट है वो भी न्यूज में है। Why in news? President of India granted assent to passed Mediation Act 2023 seeking to promote mediation as a preferred mode of ADR in India. Key highlights देखते हैं इसके। Key highlights on Mediation Act 2023 defines mediation. It includes expression mediation, pre-litigation mediation, online mediation, and community mediation. Parties attempt to reach an amicable settlement of their dispute with assistance of third person referred as mediator. ठीक है, ये इस एक्ट के इसमें डिफाइन किया गया है। Voluntary pre-litigation mediation. Parties can attempt to settle civil or commercial dispute by mediation before approaching any court or certain tribunal. कोर्ट में जाने से पहले या बाहर में सुलझा लो मैटर by mediation. Dispute not fit for mediation. कौन कौन से केसेस जो नहीं है fit? Relating to claims against minor or person of unsound mind, involving criminal prosecution, affecting the right of third parties. Rights अगर अफेक्ट हो रहा हो, criminal prosecution हो, या फिर
माइनर के क्लेम्स हों या पर्सन जो अनसाउंड माइंड का उसके अगेंस्ट में कोई बात हो तो वो फिर कोर्ट में जाएगा, वो मीडिएशन से सॉल्व नहीं होगा। टेरिटोरियल jurisdiction, mediation to take place within territorial jurisdiction of court or tribunal of competent jurisdiction unless party agree otherwise or undertake mediation in online mode। ठीक है। Timeline for conducting mediation must be completed within 120 days, which may be extended by another 60 days consenting to the party। A party may withdraw from mediation after 2 sessions। तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो, आप 2 सेशन हो गए उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन मस्ट बी कंडक्टेड एज पर द रूल फ्रेम बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कोर्ट से जो मीडिएशन के लिए जाता है जो केस, उसमें उस कोर्ट के रूल्स भी लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रूल्स लगेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 1 chairperson and 2 full-time members, 1 part-time member and 3 ex officio members। ठीक है। Defines mediation service providers is a body or organization recognized by MCI for conducting mediation। Mediation can be done by authority constituted under Legal Services Authority Act 1987। Enforceability, agreement resulting from mediation will be binding and enforceable in same manner as court judgment। Verdict can be challenged before a competent court within 90 days। इसको आप चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है। मीडिएटेड सेटलमेंट कैन बी चैलेंज ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, करप्शन, impersonation, dispute not fit for mediation। अब हमारा नेक्स्ट है लोक अदालत। सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइज स्पेशल लोक अदालत ऑन 75th ईयर ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। एक स्पेशल लोक अदालत बनाई गई 75th ईयर पे। लोक अदालत क्या है? पीपल्स कोर्ट कहते हैं इसको, इंग्लिश ट्रांसलेशन। लोक अदालत इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट नालसा के अंदर 1987 में। In 2002, Act was amended to establish permanent लोक अदालत्स for public utility service which are guided by principle of natural justice। However, they are not bound by Code of Civil Procedure and भारतीय साक्ष्य अधिनियम which was earlier Evidence Act। It has same power as civil court। Civil court की तरह इसके powers हैं under CPC Code of Civil Procedure 1908। Decision made by लोक अदालत is final। It is final and also binding and no appeal can be made against decision। तो ये 3 बड़े बड़े वर्ड्स देखो, फाइनल भी होता है, बाइंडिंग भी होता है और आप अपील भी नहीं कर सकते। Cases referred to लोक अदालत include any case pending before any court, any dispute which has not been brought before any court and is likely to be filed before court। नेचर ऑफ केसेस कैसा होगा? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स हो गया, लैंड एक्विजिशन का हो गया, इस तरह के केसेस यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट लोक अदालत कब हुआ था, बना था? इट वॉज इन 1982 इन जूनागढ़ गुजरात में। ठीक है। नाउ फ्री लीगल एड। Supreme Court issued direction for Legal Service Authority to ensure access to free legal aid for prison inmates। Prisoners के लिए free legal aid की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। Now, what is free legal aid? It refers to the provision of free legal services to individuals who are unable to afford legal representation or access to justice system। Legal aid can include legal advice, representation in court proceeding, mediation, negotiation, and alternative dispute resolution mechanism। Now, constitutional provisions regarding legal aid। Article 21, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। Article 22 से इसको पावर मिलती है और Article 39A से भी। It ensures justice are not denied to any citizen because of economic or other disability, which was added by 42nd Constitutional Amendment। Sorry। Statutory provision for legal aid। Legal Aid Authority Act 1987 came into force in 1995 to constitute LSAs, Legal Service Authority, to provide free legal and competent legal services to weaker section of society। National Legal Service Authority (NALSA) and State Legal Service Authorities (SLSAs), you can say SALSA, and District Legal Service Authority (DLSAs) were accordingly constituted। Section 341 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Legal aid to accused at state expense।
in certain cases where accused lack the mean of legal engagement. ये mention किया गया section 341 में. Government steps taken for legal aid. Designing innovative solution for holistic access to justice in India, Disha scheme, टेली लॉ एंड न्याय मित्र प्रोग्राम, लोक अदालत, ये सारे स्टेप्स हैं. नालसा के बारे में बात की गई है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी which is constituted under this act and it provides free and competent legal services to weaker section of society. It formulates policies, principles, guidelines and frame effective schemes for SMSA to implement legal service program throughout the country. It monitors and evaluates implementation of legal aid programs. It organizes local adalats to amicable settlement of dispute. Eligibility of free legal aid: women and children, member of scheduled caste, scheduled tribe, victim of mass disaster, industrial workmen, mentally ill or otherwise disabled person, victim of trafficking in human beings or beggars as in Article 23, person in custody in protective home, juvenile home or in psychiatric hospital, person whose annual income less than amount prescribed by respective state government if the case is before court other than the Supreme Court, and less than ₹5 lakh if cases before Supreme Court. तो ये सारे केसेस के अंदर में ये जो लोग हैं ये एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड के लिए. ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया की बात करते हैं. इलाहाबाद कोर्ट ने हेल्ड किया अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट while exercising contempt jurisdiction under Administrative Tribunals Act 1985 lies before SC only, not the High Courts. तो ये वाला जजमेंट इसने हेल्ड किया है. कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन अगर होगा अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तो वो सिर्फ एससी के पास है, एचसी के पास नहीं है. ट्राइब्यूनल सिस्टम के बारे में बात करते हैं. इसका नेचर होता है क्वासाई जुडिशियल होते हैं. क्वासाई जुडिशियल बॉडी, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू रिड्यूस केस लोड ऑफ जुडिशरी and bring in subject expertise for technical matter. Constitutional recognition, Article 323 and Article 323 इसके 323A and 323B में ट्राइब्यूनल की बात की गई है. तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323A. एंड इसके जुरिस्डिक्शन की बात करें तो एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट with respect to recruitment and condition of services of person appointed to public services and post in connection with affair of union and or other authorities under control of government. तो जो सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स होते हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके जो कंप्लेंट्स होंगे वो उसको एडजुडिकेट करने के लिए यहाँ पे ये जुरिस्डिक्शन बनाया गया है. इन 2010 सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज दैट सब्जेक्ट मैटर अंडर आर्टिकल 323B आर नॉट एक्सक्लूसिव and legislatures are empowered to create tribunal on any subject matter under their purview as specified in 7th schedule. Jurisdiction: each tribunal is given a specific jurisdiction to hear and decide cases within its designated area of expertise. Some tribunals have appellate jurisdiction, meaning they hear appeals from decisions made by lower authorities or government bodies. ठीक है. Appeals from tribunal usually lie with High Court. However, some laws specify that appeals will be heard by Supreme Court. जैसा कि इस केस में हुआ कि उसमें बोला कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही आना है. डिफरेंस बिटवीन ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट. तो कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली इट कैन establish. Tribunals by acts of parliament inserted via 42nd Amendment Act by adding 323A and 323B for making other matter like taxation, land reform. It was recommended by Swaran Singh Committee and purpose to resolve dispute and complaints on specific matter, to interpret and maintain law and order in their jurisdiction and give decision on civil and criminal matter, not bound by specific procedure but governed by principle of natural justice. ठीक है, it is bound by procedural codes. Member, a mix of judicial and expert with special knowledge. It is judicial only. Judicial and experts with special knowledge. यहाँ पे सिर्फ judicial members नहीं है, दोनों हैं, experts भी हैं. यहाँ पे सिर्फ judicial है. Power limited to law under which they are set. Power to use all enacted law.
बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइब्यूनल जो है उसके पास लिमिटेड पावर है, वो किसी एक स्पेसिफिक इशू या केस के लिए ही उसको स्टैब्लिश किया जाता है और किसी उसी से रिलेटेड चीज़ों को देखता है, और कोर्ट का एक ज़्यादा बड़ा डोमेन। तो ये हमारे ट्राइब्यूनल्स खत्म होता है। बेल्स से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।